चलो, we will continue with this wide field sensor. Fine, this is also considered the WFS. Okay, so wide field sensor is here, as per the name is given, the wide field. Wide field, that means it will cover the maximum area, maximum land area in a particular time, and the sweep value of the camera using in the wide field sensor is approx the 780 kilometer. Okay, how much? 780 kilometer is the approx sweep value of this wide field sensors. Okay, and this is capable. Actually, this wide field sensor is capable of the covering of the Indian continent, or you can say the Indian subcontinent, in the within 5 days. That means कि 5 days में क्या कर सकता है? It will cover whole the Indian subcontinent. Fine. Okay. So this is the this is the important actually payload of the IRSS. ठीक है. And what is the use of this? This is actually useful for the vegetation and the drought. Okay, drought, that means any particular region where the any particular area where the drought condition is happening. Okay, so it can be identified, it can be monitored by using the wide field sensors of the Indian remote sensing satellite. Clear? Okay, so here some remote sensing satellites examples are given here. Okay, so you can put that remote sensing satellites example. Okay, रिसैट का नाम सुना आपने, RISAT. ओके, रिसैट. और अभी अगर जो न्यूज़ में आप बने हो ना, तो अभी रिसेंट में भी रिसैट लॉन्च किया गया था, आई थिंक 2019 में. फाइन. ठीक है, देयर इज सम RSS are given. Okay, that's the first one is the reset. Okay, reset, that means remote sensing satellite. ठीक है, this is the remote sensing satellites. So this is reset is actually the reset program of ISRO is launched in the year of actually 2009. Okay, and till the date the 4 reset series satellites are launched already. Okay, and what is the basic use or basic applications of the reset? किस चीज में reset satellites का यूज होता है, उसके क्या क्या applications हैं? Like natural resource management. Okay, natural resource management. Okay, clear? Next one is here disaster management. Disaster management is another applications of the reset series satellite. Disaster management. Clear? And the search and the rescue operation. Search and rescue operations. Okay, this is the basic use of the reset series satellites. Okay, one more thing here you have to be write down that कि अगर जब भी कभी रिसैट या किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट्स के बारे में आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट्स. ओके, so firstly you have to put these applications. After that, if suppose that this reset is considered under the category of the remote sensing satellites, तो अगर आपको applications नहीं मिलता है तो you can put the applications of the remote sensing satellites under this reset question. Okay, जो भी reset से related question आ रहा है. Fine. Okay, so now the first second जो reset 2. Okay, actually the reset program is launched by the ISRO in the 2009 and 9 में जब ये launch किया गया तो the first satellite of the reset series was the reset 2. अब आप बोलोगे सर reset 2 क्यों? एक्चुअली ऐसा है कि reset 1 जो था उसको टाइम से लॉन्च नहीं किया जा सका था. फाइन, तो reset 2 was prepared at that time, तो reset 2 को लॉन्च किया गया. तो इट विल बी जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर सीक्वेंस में देखोगे तो दिस इज द
सेकेंड सैटेलाइट्स ऑफ द रिसर्च सीरीज, बट लॉन्च का अगर सीक्वेंस देखोगे तो इट फर्स्टली लॉन्च सैटेलाइट्स ऑफ द रिसर्च सीरीज. ओके, so what is the use of the RISAT 2? This is useful in the monitoring India's border as part of the anti-infiltration and the anti-terrorist operation. That means surveillance of Indian borders. Yeah, Indian borders area. Okay, okay, for the purpose of anti-infiltration and the anti-terrorist and anti-terrorist. Okay, that means आप कह सकते हो कि this is useful for the surveillance and it is used for the military purposes. Clear? So by using this RISAT 2, the security of India is monitored and governed by the applications of the RISAT 2 series, RISAT 2 satellites. Okay, and some another use of this RISAT 2 is the such as the disaster management. Okay, and search and rescue operation. Okay, disaster management and search and rescue operations. Clear? Acha, one more thing is here. This second use of the RISAT 2, like the disaster management and search and rescue operation, this is common as the RISAT 1. Okay, RISAT 1 is also using for these purposes. Okay, but the specific use of the RISAT 2 is for the surveillance on the Indian borders. Okay, yeah, Indian border areas for the purpose of the एंटी इन्फिल्ट्रेशन एंड द एंटी टेररिस्ट. ओके, तो उसमें क्या करेंगे, ये सबको जो भी ऐसे एंटी टेररिज्म और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट टाइप्स ऑफ द ऑपरेशंस. क्लियर? द नेक्स्ट इज द कार्टोसैट सैटेलाइट्स. कार्टोसैट. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कार्टोसैट? देखो, कार्टोसैट satellites. Okay, actually the this is the stand for the cartography. क्या होता है cartography? Cartography is basically an art of mapping. Okay, किसी चीज का मैप बनाना जो होता है, it will consider the cartography to prepare the map of something, map of a country, map of a continent. Okay, is considered as the cartography. Okay, so this satellites is used for the cartographic purposes. Okay, ठीक है, this is the purpose, this is the application of the cartosat. Okay, what are the applications of the cartosat? Like this is earth observatory satellite. This is the earth observation. Okay, that means earth observation, it will be useful in the earth observation. By observation of the earth, it will be helpful for the cartography of the earth. Fine. The second one is the scene specific spot imaging. Okay, scene specific spot imaging. ओके, सपोज दैट कि जैसे अगर अर्थ का कोई एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, ऐसे माउंटेन्स वगैरह हैं. ओके, तो दिस इमेजर, जो इमेजर लगे होंगे, दिस इमेजर आर द एक्चुअली स्पेसिफिक स्पॉट इमेजेस. दैट मीन्स इट विल कैप्चरिंग दोज एरियाज. ठीक है, दोज एरियाज वेयर at the those mountain areas where the snow is covered. Okay, that means suppose that if we have to be draw the permafrost region
of the mountain areas. Okay, so in that case, these scene specific spot images are providing the images and the pictures of those particular permafrost area. Okay, permafrost area. क्या होते हैं permafrost area? Permafrost area means the area which is actually more for more than 2 years it will be covered by the snow or by the ice. Fine. So that area will be considered under the permafrost area. Clear? Next one is the detailed mapping and other cartographic applications. इसका next application, the detailed mapping and other cartographic applications. Okay, so these are the actually use of the cartosat series satellites or applications of the cartosat. Okay. Next one is the रिसोर्स सैट. ऐसे समझते हो, चलो बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है. रिसोर्स सैट. ओके, रिसोर्स सैट दैट मीन्स दिस इज फॉर द रिसोर्स मॉनिटरिंग satellite. Clear? Resource monitoring satellites. And we know that the special type of sensors and the cameras and the images will be used as a payload of the resource satellites. Clear? And next one is the scat sat. Okay. Next one is the scat sat. Scat sat is actually, this scat sat is actually consisting the scatterometer. Okay, it is consisting the scatterometer. Meter. What is the scatterometer? Suppose that कि कोई भी जैसे एक राडार सिस्टम है. क्लियर? देयर इज अ सपोज दैट देयर इज अ राडार सिस्टम. ठीक, वी नो दैट कि राडार्स आर प्रोड्यूसिंग सम राडार वेव्स. ओके, and when the radar waves are traveling, it will actually crossing the different types of the medium. Suppose that radar is generating from the lower earth surface, and when it will reach at the upper atmospheric level, it will crossing the different types of the medium. Okay, and at this time, there is some scattering of the waves occurs. Scattering of waves. Okay, obvious सी बात है, जैसे कि अगर कोई भी, we know that कि when it will passes from the denser medium to क्या बोल सकते हो उसको आप, डेंसर मीडियम टू नॉर्मल मीडियम. ठीक है, और नॉर्मल से डेंसर में जब भी वो आएगा तो इसके जो पाथ है वो स्कैटर कर जाएगा. क्लियर? ओके, and this scattering is done by the diffusion. ठीक, diffusion. So the light beam or any radar waves are scattered. ठीक है, are scattered by the diffusion process. So the calculation of those diffusion or scattering of the waves by the scatterometers. Okay, so this is the SCATSAT, and SCATSAT is actually using for provide, इसका एप्लीकेशन है. SCATSAT is providing, this is providing wind vector data clear, for weather forecasting, clear, cyclone detection and
tracking. Okay, so this is the application of the scatometer satellites, or you can say the sat. Clear? Okay. नाउ यहाँ पे एक नया हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है, एंड दिस सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड इनटू द February 2013 by using the PSLV C-20. Okay, which satellite launch vehicle? PSLV C-20, and the satellite name is the Saral. Okay, Saral. ठीक है. What is the full form of Saral? Saral is stand for the satellite with Argos and Altica. Okay, satellite with Argos and यहाँ पे and Altica. Okay, so the SARAL. Okay, Argos AR, Altica AL, and satellite is S. Okay, actually this Saral satellites is a joint venture between the India and the French Space Agency, and satellite Saral was launched in the 2013 for the purpose of oceanographic studies. Okay, oceanographic studies. Clear? ठीक है. Argos and Altica क्या है? These are the sensors. Okay, and sensors developed by the French Space Agency. Clear? Okay. What are the applications of the Saral? इसके applications important है, ठीक है. So you have to write down the applications of the Saral. So applications are involving in the Saral is the marine meteorology, okay, and sea state forecasting, and sea state forecasting. Okay, that means what kind of the weather phenomena are formed over the oceans. Okay, so it will be monitored and observed by using the Saral. Okay, the next one is the operational oceanography. Operational oceanography. Okay. Okay. Oceanography. Actually, India is performing the deep ocean mission. Okay, and this deep ocean mission is carried out by the use of, or you can say by the help of, by the aid of this Saral satellites. Okay, the next one is the seasonal forecasting. Seasonal forecasting. Clear? Next, climate monitoring. Climate monitoring. Okay, क्या climate होगा, कैसा होगा, fine, like this. The next one is the ocean earth system and climate research. Okay. The next one is the continental ice study. These are the applications. Okay, continental ice studies. Clear? सपोज दैट कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, कोस्टल रीजन में आइस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी वाटर फ्रीज होकर के आइस बनाता है. फाइन, लाइक द ग्रीनलैंड, और यू कैन से कंसीडर द सम यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. फाइन.
Next, protection of biodiversity. Protection of biodiversity. Okay, that means by the phenomenal changes in the oceans, how the biodiversity get affected. Okay, so this is also useful in the protection of the biodiversity of the ocean. Okay, then management and protection of marine ecosystem. Same चीज है ना, management and protection of management and protection of marine ecosystem. Marine ecosystem. Okay, the next one is the environmental monitoring. Environmental monitoring. Clear? And the last one is the improvement of maritime security. Maritime security. Okay, if you are just remember that the what is the aim of the सरल, तो स्टार्टिंग में हमने बात किया कि दिस द मेन गोल ऑफ द सरल सैटेलाइट इज द ओशिनोग्राफिक study. Okay, so each and every applications will be carried out by the Saral in reference of the ocean. In reference of the ocean. Fine. Okay. So here the some basic components of basic payloads are given of the Saral satellites. ठीक है, बेसिक कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं. The components of the Saral are as follows, like the Ka band altimeter. Okay, this is the altimeter, that is Altica. Okay, and this is built by French National Space Agency. Okay, that means the Altica is built by the French Space Agency. Clear? And this is the intended for oceanographic applications. Clear? This is the Altica. The second one is the Argos. ARGOS. Okay, Argos, this is nothing, this is the data collection system. Okay, that means it will provide the information. The altimeter will be provide the informations, and Argos is the data collection system. That means the Argos is responsible for the collection of those information or those data. Also built by the French National Space Agency. Okay, and it will collect the variety of data. Clear? Will collect the variety of data. Solid state C band transponder is here. ठीक है, कौन सा? Solid state C band transponder. ये इसके क्या थे? These are the payloads. The first one is the Ka band altimeter. Second one is the Argos, the data collection system. Altimeter, that means this on the Altica. Clear? And the last one is the C band transponder. Okay, and we know that the maximum the expanded C band transponder and Ku band transponders are using
frequently by the ISRO. ठीक है. So this is for the for ground radar calibration. Which one? This C-band transponder. That means it will work with the coordination with ground radar system. Fine. Okay. So these are the types of what? These are the types of the RSS, the remote sensing satellites, and we have discussed some types of the remote sensing satellites. Resat, SCATSat, ResourceSat, CartoSat. Okay. Then Saral. Okay. Now the next one is the first was the पहला क्या था हमारा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में. फर्स्ट वाज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ओके. कम्युनिकेशन सैटेलाइट. Second is the remote sensing satellites. Now the third one and third one is considered as the navigation satellite. ठीक है. Navigation satellites. According to the types of satellites, the purposes are different. ठीक है. Of different satellite. ठीक है. उनका सबका अलग पर्पस होता है, सबका अलग एप्लीकेशंस और यूज होता है. क्लियर. ओके. So here the third one is the navigation satellite system. Clear. The navigation satellites are useful for the navigation purpose. Okay. That means suppose that कि अगर you whenever you are using the GPS, okay, the global positioning system, it will provide the information regarding the navigations. Okay. So that means the navigation satellites is actually helping the GPS system. Clear. बहुत सारा इसका ब्रॉड यूज होता है. इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, द इंडिया इज नाउ डेवलप्ड द our own navigation satellite system, which is known as the IRNSS. Okay. IRNSS. Okay. Stand for the Indian Regional Navigation Satellite System. This is the IRNSS. Okay. So the IRNSS is suppose that कि ये हमको क्या दे रहा है, नेविगेशन दे रहा है. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द नेबर कंट्रीज इंक्लूडिंग सम मतलब कि स्मॉल नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया can get the services regarding the navigation from the IRNSS. Okay. And this IRNSS is also known as the NAVIC. Okay. NAVIC is here stand for the navigation with Indian constellation. Okay. Navigation with Indian constellation. What is the constellation? Constellation, that means this is the क्या बोल सकते हो उसको, ग्रुप ऑफ स्टार्स. ओके. ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द स्टार्स. सपोज दैट जैसे पुराने टाइम में जब नेविगेशंस के लिए कुछ नहीं होता था,
हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जिस पे हम नेविगेशन सर्च करें। तो एट दैट टाइम द सेलर्स, जो सेलर्स हुआ करते थे, सेलर्स, सेलर्स मतलब जो शिप वगैरह लेके आते जाते थे, जो बोट वगैरह लेके आ जाते थे ओशन में, दे एक्चुअली दे वर यूजिंग द constellation, you can say they were using the group of stars for the navigation. Okay, so here IRNSS is also considered as a navik. Fine. Okay, IRNSS is an autonomous regional satellite navigation developed by the ISRO. ठीक है, ऐसा लिखना, developed by the ISRO. ठीक है, developed by the ISRO. And and now this is the under complete control of the Indian government. ठीक है, and it is actually developed to provide the actual position, ठीक है, actual position information service to users in India. That means कि अभी तक क्या है, लोग केवल GPS का यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्यूरेट पोजीशन को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, या उसके एक्टिव पोजीशन की इंफॉर्मेशन के लिए. बट नाउ द IRNSS इज ऑल्सो हियर टू डिज़ाइन टू प्रोवाइड द एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूज यू कैन से एक्सेप्ट द इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट द इंडिया, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर. कितना, हाउ मच, 1500 kilometer. Okay, 1500 kilometer from its boundary, which is its primary service area. Suppose that the coastal area या coastal region या coastal border of the India is where, and from that particular border area, the 1500 kilometer around, okay, the IRNSS is capable to provide their services. Okay, okay, and IRNSS is actually IRNSS is actually developed for providing the two types of the services. Okay, for providing the two types of the services. ठीक है, the first one is the SPS. SPS stand for the standard positioning system. Okay, a GPS is for the global positioning system. Okay, and here the SPS, this is the standard positioning system, and this service will provide for the civilians, okay, that means the civilians can access the standard positions, okay, by using the service provided by the IRNSS, name is the SPS. Okay, the second service will be provided by the IRNSS, and this one is the RS. Okay, and RS is stand for the restricted services. Okay, restricted services, that means this is encrypted for the authorized ones. Okay, that means some authorized body, organizations or persons, okay, personals are using these services. Okay, so this restricted services is here for the military use. Okay, for the military use. And actually IRNSS is here with 7 satellites. Okay, and these 7 satellites, in which the 3 of the satellites will be placed into the geostationary orbit, and the 4 is in the geosynchronous orbit. Clear? That means कि 3 को geostationary में रखेंगे और 4 को कहाँ पे रखेंगे, जियो सिंक्रोनस में, एंड कंप्लीटली 7 सैटेलाइट्स यहाँ पे होंगे. ओके,
and these 7 satellites are known as the Navik. Clear? Okay. The first satellites of this IRNSS, you can say the Navik system, is the IRNSS 1A. ठीक है, the first is the IRNSS 1A. Clear? And this was launched in the 2013. Clear? 2013. And the IRNSS 1G, okay, 1G is launched into the 2016. 2016. Clear? ठीक है. Actually, the IRNSS 1G is the latest. This is the latest satellites of the IRNSS. ठीक है, नाविक पहला लॉन्च किया गया था कब? 2013 में. एंड जो लास्ट अभी वर्किंग में है, दिस वन इज द IRNSS 1G. इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2016. In the year of 2017, 17, yes, I think 17, the IRNSS 1H was launched. Come in 2017, but this launched was the unsuccessful. Okay, this was the unsuccessful launched. Okay, तो अभी अगर हम बात करें तो how many satellites is working? A, B, C, D, E, F and G. A, B, C, D, E, F and G. That means here is 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G and सब के आगे IRNSS. Clear? Okay. IRNSS दिख नहीं रहा होगा, इधर देखो. So currently the 7 satellites are working. IRNSS 1A, B, C, D, E, F and 1G. Clear? So these are the 7 satellites of Navik. Okay, the 8th one was the IRNSS 1H, which is launched in the 2017, but it was the unsuccessful. Okay. Okay, now the 7th is this. In the year of 2018, the 8th satellite of the IRNSS series is launched, and the satellite name was the IRNSS 1I GHI. Yes, in the 2018, launched in 2018. Clear? So this was the 8th satellite. This is the 8th satellite of this Navik series. Clear? Okay. So here some payloads are here about the navigation satellites IRNSS. ठीक है, कुछ पेलोड्स यहाँ पे दिए गए हैं. इसके लिए नाविक के लिए पेलोड्स हैं या IRNSS के लिए. ओके, द पेलोड्स आर the first one is the transponder. The first one is the navigation payload. ओके, ठीक है. किसके नेविगेशन पेलोड? IRNSS के. क्लियर? और यू कैन से द नाविक. ठीक है, दिस इज द ट्रांसपॉन्डर इन L5 एंड 2S बैंड कैटेगरी. ठीक है, ट्रांसपॉन्डर इसमें है क्या?
transponder in L5 and 2S band category. Clear? And this is the navigation payload. The second one is the ranging payload. ठीक है. The second one is the ranging payload. Clear? The ranging payload is here in which the transponder, क्या क्या होगा इसमें, transponder C band category. Okay, C band category, and the atomic clock based on rubidium, and the atomic clock based on the rubidium. ठीक है. रुबिडियम क्या है? रुबिडियम केमिकल element. Okay, this is a chemical element, name is the rubidium. Clear? So rubidium is here using in the atomic clock, and this atomic clock is a payload of the IR-NSS and the transponder with the C band category. Clear? So here the applications of the IR-NSS is given. जैसा कि हमने बताया कि the use of the NAVIC, or you can say the IR-NSS, is actually two types of the services. And the first one is the SPS services, that means the special positioning system service, and second one is the restricted service. It's considered as a RS. Okay, so what is the use or what is the applications of the IR-NSS? Clear? Applications. तो एप्लीकेशंस में आप सबसे पहले देखोगे टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड द मैरीन नेविगेशन. ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मैरीन navigation. Okay, that means all the three types of the navigation services will be provided by the IR-NSS NAVIC. Okay, next is the disaster management. Disaster management, that means finding the any disaster phenomena. Okay, and providing the information regarding that, and it will क्या कर सकता है, एक तरीके का अलार्म की तरह काम करेगा. इट विल प्रोड्यूस अ वार्निंग सिस्टम. ओके, और उससे क्या होगा, वी कैन मैनेज द डिजास्टर्स. ओके, नेक्स्ट है द व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट. व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट. फ्लीट मैनेजमेंट दैट मीन्स कि कोई भी शिप होती है, राइट, ओशन शिप या सी शिप होती है, वाटर शिप होती है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है बाय यूजिंग द सर्विसेज ऑफ नाविक. क्लियर? व्हीकल ट्रैकिंग तो इज ओके. ओके, नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन विद मोबाइल फ़ोन. ठीक है, हाँ, फीट मैंने इसी में कंटिन्यू कर लेना. इंटीग्रेशन with mobile phone. Okay, mobile phone, that means like this कि जैसे you are using the GPS. Okay, that means you have the mobile phones, you have a device which is actually GPS enabled device. Clear? So like this you have you must have the navic enable mobile phone or the devices. Clear? तो उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, जो भी होगी व्हीकल ट्रैकिंग वगैरह सब किया जा सकता है. ठीक है, जैसे व्हीकल में बहुत सारे जीपीएस लगे रहते हैं ना, तो पता चल जाता है अगर कोई चोरी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो वी फाइंड दैट कि एक्चुअली वो गाड़ी जो है इसमें कहाँ पर है. क्लियर? तो लाइक दिस वी कैन यूज दिस नाविक सिस्टम ऑल्सो.
क्लियर. नेक्स्ट वन इज द प्रिसाइज द टाइमिंग. ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम को क्या करेगा, बचाएगा. क्लियर. प्रिसाइज द टाइमिंग. ओके क्लियर. तो नेक्स्ट वन इज द मैपिंग एंड द जियोडेटिक डेटा कैप्चर. ठीक है. मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर. ओके. मतलब पिक्चर्स वगैरह सब कैप्चर करके क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा. मैपिंग भी कर सकता है. ठीक है. ओके. टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर द हाइकर्स एंड द ट्रेवलर्स. ओके. टेरेस्ट्रियल नेविगेशन दैट मीन्स कि जो भी मतलब ट्रेवलर्स, कोई भी गाड़ी से जा रहा है, कोई किसी अनदर बाई रोड जा रहा है, फॉर द टेरेस्ट्रियल रोमिंग. ओके. so in that case it will be useful for the navigation. Okay. And the it will consider under the terrestrial navigation. Clear. The next and last one is the visual and the voice navigation for the drivers. That means कि जैसे आप GPS ऑन करते हो तो मोबाइल फ़ोन में देखते हो कि here is the visual what visual navigation is also showing on your mobile phones as well as पीछे से एक आंटी रहती है ना कि just take 200 meters straight and after take the left, right? So this is the what, this is the voice navigation. Okay. So these two options will be available in the Navig system in the SPS service of the Navig satellite system. Clear. Okay. So next navigation satellite system of the India is name is the Gagan. Okay. तो ये तो था नाविक. नाविक के इतने सारे एप्लीकेशंस थे. ठीक है. बहुत सारे थे. आप इसको आराम से लिख सकते हो अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द नाविक सिस्टम, नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ द इंडिया. ओके. एंड व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द नाविक. ठीक है. तो यू हैव द कंटेंट और आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो आंसर को. क्लियर. आई थिंक कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके. द नेक्स्ट वन इज द गगन. गगन. गगन इज स्टैंड फॉर द GPS एडेड. ओके. GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. ओके. GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. क्लियर. दैट मीन्स कि गगन जो है एक्चुअली दिस इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द इसरो एंड द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द, किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, इसरो एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का. क्लियर. तो actually this is an indigenous satellite based regional GPS augmented system. ठीक है. and also known as the space based augmentation system. Gagan is also known as the space based augmentation system. Okay. that means space based SBAS. Okay. This is also known as the space based augmentation system and this program was launched into the 2001. ठीक है. launched in the program was launched in the 2001. बट अगर इसका फर्स्ट लॉन्च देखोगे ना सैटेलाइट का, द फर्स्ट सैटेलाइट्स ऑफ द गगन सिस्टम was launched in the 2011-12. ठीक है. कब लॉन्च किया गया था, 2011-12. ओके. एंड द गगन वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन इन द जुलाई 2015 में इसको कमीशन कर दिया गया. एंड नाउ द गगन इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. ओके. और जो भी हमारे सिविल एयर एविएशंस होते हैं, राइट, तो दोज कंपनीज आर ऑल्सो taking the services from the
गगन सिस्टम, ठीक है। चलो, नाउ दी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द गगन सिस्टम, इस पे बात कर लेते हैं कि गगन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? applications of the gagan. Actually, we know that the airports authority of India is also taking the services from the gagan system. Clear? That means अब इसका joint project है किसके साथ? इसरो के साथ. So gagan is actually capable of providing the navigation services to the departure en route and the landing operation in the suitable equipped aircraft. Okay, that means the aircraft which is enabled to the gagan suitable devices, ठीक है, you can say the gagan enabled devices, ठीक है, तो वो करेगा क्या कि at the time of take off, ठीक है, at the time of take off, at the time of departure, at the time of landing, and when the flight is en route. Okay, so at the all the times it will provide the information regarding the navigation to the फ्लाइट. ओके, तो वो सब कुछ उससे क्या करेंगे, जो भी जो एयर नेविगेशन वगैरह है, तो इट विल प्रोवाइड द ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू दैट. क्लियर? ओके. एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द satellite based navigation service with the accuracy and the integrity required for the civil aviation application, and is also providing the efficient air traffic management services over the Indian air space. One more thing is here, आपने देखा होगा कि अगर किसी भी नेविगेशन सिस्टम को अगर हैक कर लिया जाए, क्लियर, तो किसी भी कंट्री के जो भी फ्लाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, राइट. बट बाय यूजिंग द गगन सिस्टम, हमारा खुद का ही सिस्टम है, किसी अदर कंट्री का सिस्टम नहीं है, तो इन सब चीज़ों को वी कैन easily tackle all the problems related to this. Clear? Okay, one more thing is here. Karnataka and Andhra Pradesh, okay, sorry, Tamil Nadu, एक्चुअली इन दोनों के बीच में ना एक फॉरेस्ट एरिया है. क्लियर? एंड देयर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द स्टेट्स, ठीक है, बोथ द स्टेट्स regarding this forest area. Clear? So by using this gagan, it can be easily mapped out the particular area of the forest belongs to the particular one state. Okay, तो ये जितनी भी इस तरह की डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द किसी तरीके का अगर फॉरेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट है, या सपोज दैट एनी वाटर बॉडीज, जो भी वाटर रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं या अनदर वाटर बॉडीज का जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट है, ओके, तो इट विल बी इजिली टैकल बाय द यूजिंग द गगन सर्विसेज. क्लियर? ओके, so this is the actually applications of the gagan, or you can say the GPS aided geo augmented navigation. Okay, here some another the global navigation. Actually this is all are about the satellites, types of the satellites of the ISRO. The first was the communication satellites, and second is the remote sensing satellites, and last one is the navigation satellite. Clear? सम यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कुछ ग्लोबल, सम ग्लोबल नेविगेशन systems. Okay, clear? Some global navigation systems are given here. The first one is the GPS. The first one is the GPS, and you know very well that GPS stands for the global positioning system. Okay, what is the origin country of the GPS? This is the US origin. Okay, US origin. Clear? Actually the
GPS is a satellites based radio navigation system, ठीक है, and this is owned by the US, and now it is operated by the US Air Force. Okay, and starting में the GPS is created for the Air Force services, or you can say for the military services, but after some times the services is opened by the US government for the civilians also. Clear? So it is a global navigation satellite system, and that provides the what? That provides the geolocation and time information to a GPS receivers anywhere on or the near the earth. Okay, that means today the GPS is providing their services to most of the countries. Okay, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो जीपीएस को क्या कर रही हैं, नहीं रही हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि till now the GPS is consisting, you can say the GPS have the total satellite is 33. Okay, and right now the satellites in the orbit, that means in operation right now the 31 satellites are providing the services. ये जो दो सैटेलाइट्स यहाँ से आपको कम दिख रहे हैं उनका क्या हो गया था, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. हो सकता है कि वो कहीं पे गायब हो चुके हों या ऊपर मतलब स्पेस में वो डिस्ट्रॉय हो चुके हों. ठीक है, ओके. द फर्स्ट लॉन्च ऑफ द GPS in the year of 1978. Okay, in the year of 1978, and अभी तक का जो टोटल लॉन्च है, द टोटल लॉन्च इज 72. ओके, टोटल लॉन्च इज 72. अभी तक 72 टोटल लॉन्च किए जा चुके हैं. बहुत सारे फेल हुए, बहुत सारे पास हुए. क्लियर? एंड the satellites of the GPS are moving in the MEO. Okay, this is the middle earth orbit. Clear? And मैंने पहले बोला ना कि this was the developed for the military purpose, but after some times in the, I think in the year of the 1994 it will be available. This was the available for the civilian use. ठीक है, so here some applications are also given. ठीक है, about the GPS, applications of the GPS. Okay, the first, you can say नहीं, first छोड़ो. In astronomy, that means the study of space. जो भी स्पेस में जो भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, राइट? so for the study of those things in the astronomy, and where in automated vehicles. Okay, लाइक कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि आपने अगर उसमें एंट्री कर दिया, डेटा एंट्री कर दिया, तो इट विल ऑटोमेटिकली डिसाइडेड देयर नेविगेशन. ओके, उसमें आपको दोबारा फिर सर्च नहीं करना पड़ेगा. दे विल प्रोवाइडेड द इंडिकेशन, दे विल प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेविगेशन टू ड्राइवर. ओके, एंड वेयर कार्टोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूजफुल इन द कार्टोग्राफी, यूजफुल इन द डिजास्टर रिलीफ and the emergency services. Clear? Disaster relief and emergency services. Next, fleet tracking. Clear? Fleet tracking, that means जो भी कोई ग्रुप जा रहा है किसका, शिप का, तो for track that group of the ship. ठीक है, consider the fleet tracking. Geo fencing,
ओके, जियो फेंसिंग, व्हीकल ट्रैकिंग, पर्सन ट्रैकिंग एंड पेट ट्रैकिंग. ओके, दैट मीन्स कि पर्सन को भी ट्रैक कर सकते हैं. स्पेसिफिक व्हीकल कैन बी ट्रैक्ड बाय द यूज ऑफ द जीपीएस. एंड पेट्स आर ऑल्सो, द पेट्स जो होते हैं लाइक द डॉग्स वगैरह ना, तो जो उनके जो इधर नेक नेक में जो उनका होता है पट्टा होता है, या मोस्ट ऑफ द डॉग्स की क्या होता है कि ईयर में क्या होता है कि जस्ट पुट एट द चिप ऑफ द जीपीएस. ओके, and after putting that we can easily track that key at the right time, at that particular time where they are the roaming actually. Okay, वो कहाँ पर है, ठीक. It can be easily tracked by the using GPS. Okay, next one is the GPS aircraft tracking. Aircraft tracking. Okay, नेविगेशन में यूज कर ही सकते हैं, इन द नेविगेशन. क्लियर. आफ्टर दैट in the tectonics like earthquakes in which area the earthquakes has come. ठीक है, तो ये सारी चीजें पता रखना. ठीक है. And for the military use it will be useful in the same purposes for the navigation tracking system. That means ki we can also navigate the aircrafts, we can also navigate the tanks, we can also navigate the some warships also. ठीक है, by using the GPS system. Clear. So these are the आप ऐसा भी कर सकते हो, these are the application लिख सकते हो in military use also, in military uses. ठीक है. You can set here that the navigation, or you can say the target tracking. Okay, target tracking is also done by the using of the GPS. ठीक, and for the military use. Okay, मिसाइल एंड प्रोजेक्टिंग गाइडेंस. अच्छा, अभी जब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना, ठीक है, तो वी विल फाइंड दैट देयर इज सम मिसाइल्स इज हियर, जिसको हम कंसीडर करते हैं क्रूज मिसाइल्स की तरह. क्लियर. तो क्रूज मिसाइल्स हैविंग द टेंडेंसी टू क्या कर सकते हैं, उनका जो पाथ होता है, ठीक है, तो इट दे कैन डिसाइड देयर पाथ बाई देमसेल्व्स. ठीक है, एक बार उनको अगर हम फायर करते हैं तो अपना पाथ खुद डिसाइड करते हैं. एक्चुअली द जीपीएस इज एक्चुअली हेल्पिंग दोज क्रूज मिसाइल्स. क्लियर. करेंगे उस पर बात हम बाद में. एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में ऑल्सो यूजफुल. ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. क्लियर. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. ओके, सो दिस इज अ जीपीएस. कहाँ का था ये? जीपीएस फ्रॉम द यूएस. ओके, द नेक्स्ट वन इज द GLONASS. GLONASS is stand for the Global Navigation Satellite System. ठीक है, यहाँ पे था GPS, Global Positioning System. Now the GLONASS. GLONASS, Global Navigation Satellite System. Clear. And this is by the Russia, developed by the Russia in 2011. अच्छा, इसका फुल फॉर्म लिख लो, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट system. Clear. This is the GLONASS, and it is activated in the 2011, and the first launch was done in the 1982. First launch in 1982, and the last launch in 2018. Last launch in 2018. Clear. Okay, in 2018 the total satellites is 26. 26, and in orbit the satellites are in orbit with 24 satellites. Okay,
and this is the world's second working global satellite system after the GPS. Okay, so this is the world's world's second global satellite system, world second working global satellite. Okay, system. ठीक. The next one is the, this is the GLONASS. GLONASS is originated from the Russia. The next one is the Galileo. Galileo. Okay, this is developed by the European Space Agency, also known as the ESA, European Space Agency. Clear? European Space Agency. Here is total satellite is 30. Total satellites are 30. Clear? And the in orbit 24 is usable. ठीक है? In orbit 24 is usable. Clear? That means कि actually 24 satellites are operational. ठीक है? Actually these 24 satellites are providing the services. Clear? The cost is approx the 10 billion euro. The cost is approx the 10 billion euro. Okay, ऐसा कुछ साइन होता है यूरो का, समथिंग ऐसे. Okay, this is the 10 billion euro, the cost of the Galileo. The target time that was in the by the year of 2019-20. Okay, the Galileo will be in the fully form working, or you can say they completely in operation in the 2019-20. बट अभी ये लेट हो चुका है बिकॉज वी नो दैट कि 1920 का सिनेरियो क्या था ड्यू टू द कोविड. ओके, एंड यूरोपियन कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय द कोविड, राइट. तो अभी ये डिले हो गया है. अब बोला जा रहा है कि कंप्लीटेड बाय द 2021, आई थिंक कि कंप्लीट किया जा चुका है, कंप्लीटेड बाय 2021. क्लियर. तभी इस प्रोजेक्ट को क्या मान लिया गया है, the project is completed. Clear? So this is the Galileo. Next one is the compass. Okay, compass is actually Chinese regional navigation system. Chinese regional navigation system. That means the Chinese Space Agency developed its own navigation system, which is known as the compass. Okay, and one more navigation system, you can say the one more Chinese navigation system is here, which is known as the BEDIOU, Beidou 1. Okay, so Beidou 1 is also the Chinese regional navigation system. Okay, and Beidou 2, the Beidou 2 also considered as the compass. Okay, compass, the other name of the compass is the Beidou 2, and this is the global navigation system. Global navigation system. That means the China is actually
inside the Chinese territory. Okay, the regional navigation system, Chinese regional navigation system, Beidou 1 is working, and Beidou 2 is also called the compass, is a global navigation system, that means China as well as अदर कंट्रीज ऑल्सो. ठीक है, जो भी उससे सर्विसेज लेना चाहेंगे तो एज लाइक जीपीएस इट विल प्रोवाइड द सर्विसेज. ओके, तो दिस इज द, हाँ, टोटल सैटेलाइट्स इसमें आप लिख लो. टोटल सैटेलाइट इज 35. ठीक है, एंड टारगेट टाइम दिया हुआ था इसमें. ठीक है, टारगेट टाइम बाई 2020. क्लियर. लेकिन आपको पता है कि दिस इज चाइना. ठीक, और वी कैन नॉट ट्रस्ट ओवर द चाइना. क्लियर. और केवल हम ही नहीं, मतलब चाइना पे कोई भी क्या नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, चलो. एक्चुअली ऐसा है कि जो भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली इन केस ऑफ द चाइना, आप ये नहीं कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन इज़ एग्जैक्ट और नॉट. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अपनी चीज़ों को क्या करके रखता है, हाइड करके रखने की कोशिश करता है. क्लियर. ओके, so these are the some other other what navigation missions of the other countries. ठीक है, जो कि फॉरेन हमारी कंट्रीज हैं, जैसे हमने बात किया इसमें अबाउट द जीपीएस, अबाउट ग्लोनास, कंपास, गैलीलियो एक्सेट्रा. ठीक है, ओके. तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द some recent developments, or you can say the some recent missions of the ISRO. After that we will discuss about the some foreign missions of the foreign space agencies of other countries. Clear. चलो, ठीक है. Actually, when we are talking about the missions, space missions of the ISRO, then we will firstly discuss about the MOM. This is the MOM. MOM is stand for the Mars Orbiter Mission. Mars Orbiter Mission. Okay. Actually, Mars Orbiter Mission is also called the Mangalyaan, and in the year of 2013, the MOM was launched. Okay, and launched in 2013, and I think 24th of September 2014, that is orbiting in the Mars, orbiting the Mars orbit. ओके, दैट मीन्स कि ऑर्बिट में पहुंच गया था ये कब, सिंस 24 सितंबर 2014. ओके, एंड लॉन्च इन द 2013, एंड विच रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड लॉन्च व्हीकल इज द PSLV C-25. ओके, PSLV C-25 एंड बाय द ISRO. ठीक है. Actually, when we are launching some satellites in the GSO, or you can say in the GTO, so we are using the GSLV, okay, geostationary satellite launch vehicle. ठीक है, but in this case, in Mars orbiter mission, we used the PSLV C-25. This is the polar satellite launch vehicle. So you can see this and you can assume that हाउ मच वी आर द एडवांस्ड. एडवांस्ड मत कहिए, आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो कितने ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं. फाइन, कि बाय यूजिंग द PSLV इस रेफरेंस में देखा जाए तो बहुत ही छोटा क्या है, रॉकेट लॉन्च व्हीकल है. ठीक है, क्लियर. एंड द मॉम वाज द एक्चुअली इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन. ओके,
एंड आफ्टर रीचिंग द ऑर्बिट ऑफ मार्स, ठीक है, द इंडिया केम into the group of four countries actually, ठीक है, in the group of four countries to do so. Actually before the India, here is three another countries are here which reached at the Mars, and they are considered the like the Soviet Space Agency, NASA, okay, and the European Space Agency, and after that the ISRO is reached. But अगर हम बात करें तो ISRO have credited for the reaching at the Mars in very first attempt, ठीक है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि हम पहुंचे कहाँ पे, मार्स में. ये हम पहली कंट्री हैं. फाइन, ओके. What are the actually objectives of the Mangalyaan? The primary objective is that कि showcase India's rocket launch system, ठीक है, spacecraft building and the operations capabilities. That means कि launch vehicles कितना PSLVs which is developed by the ISRO. So how much this PSLV is efficient for this type of operation? Okay, this is the main objective of the Mars orbiter mission, and that's why the PSLV used in the Mars orbiter mission. And after that, what is the spacecraft building and the operation capabilities? Operation capabilities, that means after completing the successful journey, approx successful 1 year journey, ठीक है, of the Mars orbiter mission, the world is actually saluting the Indian scientist. Okay, उन लोगों ने सैल्यूट किया इंडियन साइंटिस्ट को. फाइन. द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज दैट the secondary objective is to explore the Mars surface and the features, morphology, mineralogy and the Martian atmosphere, ठीक है, using the indigenous scientific instruments. That means कि इसमें जो भी instruments थे, payloads थे, they are completely indigenous, and those instruments are using for the exploration of the Mars, as well as the atmospheric exploration of the Mars, the morphology of the Mars, mineralogy of the Mars and the general features of the Mars, ठीक है. That means actually the possibility of the atmospheric development at the Mars surface, okay, will be observed, will be studied, or will be, you can say, the explored by this Mars orbiter mission, ठीक है. So some payloads are here in the Mars orbiter mission MOM, but today we will not discuss about the payloads. In next class we will discuss about the some specific payloads. After that हमें कुछ 4-5 अदर कंट्रीज के मिशंस को भी क्या करना है, डिस्कस करना है. एंड उसके बाद वी विल जस्ट मूव एट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स. द टॉपिक नेम इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है. डिफेंस टेक्नोलॉजी पे हम क्या करेंगे, जंप करेंगे. कल हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. एंड सब कुछ ठीक ठाक रहा. अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है, कोई पावर वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बाय दिस वीक वी विल completed our defense technology. Clear? So for the today this is enough. So thank you so much. And if you have any query and questions regarding this, any doubts regarding this, you can just comment below and I will give the answers definitely in the our next class. Okay, and for today thank you so much. Tata, bye bye and Jai Hind.